Hello students, myself Professor SP Singla. Today we will take numerical zone projectile motion. First are the formula. When an object is thrown at an angle with horizontal, then it follows path like this. The formulas was first was equation of path y is equal to x tan theta minus 1 by 2 g x square upon g x square upon u square g x square upon u square cos square theta. Second, maximum height h. Maximum height is u square sin square theta upon 2g. Third, horizontal range r u square sin 2 theta upon g, and this horizontal range is r maximum is u square upon g when theta is equal to 45 degree. Then is velocity of the particle at any instant of time. Velocity at any instant of time. It will be having two components. Vx velocity along x direction will be u cos theta, and vy velocity along y direction u sin theta minus gt. And what is the final velocity? That is vx square upon vx square plus vy square under root, and the direction is given by vy upon vx, that is u sin theta minus gt upon u cos theta. These were the required formulas to be used. Now let us take the question.
The first question is, first question is, a cricket ball is thrown at a speed of 28 meter per second. This is question 1. A cricket ball is thrown at a speed of 28 meters per second. So U is given. U is 28 meter per second at an angle of 30 degree, in the direction 30 degree above the horizontal. What is theta? Theta is 30 degree. To calculate the maximum height, first is maximum height h. This is u square sin square theta upon 2g, which is equal to u square is 28 square sin square 30 degree upon 2g, that is 2 into 9.8. This is 28 square is 784 sin square 30 degree. Sin 30 is 1 by 2, sin square 30 is 1 by 4. So this one calculation comes out this one calculation comes out 10 meter. Then second is the time taken by the ball to return to the same level, that is time period. This is t. This is 2u sin theta upon g, that is 2 into 28 into sin 30 upon 9.8, that is 2 into 28. This 9.8 is 98, 10 ऊपर लगा दे डेसिमल का, and sin 30 is 1 by 2. This 2 cancel with 2. This comes out 20 upon 7, 2.9 seconds. And third is the distance from the thrower to the point where the ball returns to the ground, that is r. This is u square sin 2 theta upon g, 28 square sin 2 theta is sin 60 degree, g is 9.8. So this is 784 sin 60 degree. This is under root 3 upon 2, 9.8. So this one calculation gives 69.3 meters. This was the first question. Next है, a cricketer can throw a ball to a maximum horizontal. A cricketer can throw a ball to a maximum horizontal distance r maximum. How much high above the ground can the cricketer throw the same ball? अगर उसको सेम बॉल को ऊपर को थ्रो करने के लिए कहा जाए तो कितनी हाइट तक वो बॉल को क्या करेगा,
थ्रो करेगा. तो लेट अस सपोज लेट u be the velocity of projection. So when he throws like this, so horizontal range is maximum when this angle is 45 degree, and what is this R max? R maximum is u square upon g. This is question. This is equation number 1. Now if he throws the same ball, upward like this with the same initial velocity u, with the same velocity u, suppose the ball rises to a height, so suppose the ball rises to height h, then in this case if he throws the same ball vertically upward with same speed u, then what is initial velocity u, what is a is minus e, ठीक है. What is the distance covered? It is h, and what is the final velocity? This is 0. So using the formula v square minus u square is equal to as 0 square minus u square is equal to minus 2gh. So what is h from here? H is equal to u square upon 2g. This is equation 2. ठीक है. तो 2 डिवाइडेड बाई 1, 2 को 1 से डिवाइड करो, r अपॉन h अपॉन r मैक्सिमम इज इक्वल टू u स्क्वायर अपॉन 2g इंटू u स्क्वायर g कैंसिल g, u स्क्वायर 1 by 2. So what is the maximum height to which the ball will rise? It is half of the maximum range. ठीक है. He can throw the ball to a maximum R max. तो मैक्सिमम थ्रो कब होती है? when angle is 45 degree. तो कहता हाउ मच हाई अबव द ग्राउंड कैन द क्रिकेटर थ्रो द सेम बॉल. सेम बॉल को कितनी हाइट तक थ्रो कर सकता है? तो सपोज ही थ्रोज द बॉल अपवर्ड, सेम वेलोसिटी, h इज द हाइट मैक्सिमम. तो ये लीनियर मोशन का क्वेश्चन बन गया. u इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी 0. ठीक है. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड होती है, माइनस जी होगी. ये लगा के वी स्क्वायर माइनस टू एस, यहाँ से h निकाल लेंगे, जाएगा u स्क्वायर अपॉन 2g. इसका हाफ है ये. h इज 1 by 2 r मैक्सिमम. Next, is a fighter plane flies horizontally. Next है fighter plane है that is flying horizontally at an altitude of 1.5 kilometer with a speed of 720 kilometer per hour. It passes directly overhead an anti-craft gun. ठीक है. let us visualize the situation. And a fighter plane. This is a fighter plane which is flying horizontally with a speed of 720
किलोमीटर पर आवर. It passes directly over an anti-craft gun. It will be going like this. तो एक एंटी एयरक्राफ्ट गन के ऊपर से पास करता है. दिस इज गन. टू हिट द प्लेन, प्लेन को हिट करने के लिए एट व्हाट एंगल फ्रॉम द वर्टिकल शुड द गन बी फायर. तो वर्टिकल से गन को किस एंगल से फायर किया जाए. वर्टिकल्स के साथ किस एंगल से फायर किया जाए. फ्रॉम द शेल, तो गन को फायर किया जाए, गन से शेल को फायर किया जाए विद ए मजल स्पीड ऑफ 400 मीटर पर सेकेंड. तो यहां से जो गन फायर करनी है उसकी स्पीड क्या है, 400 मीटर पर सेकेंड. तो उसके दो कंपोनेंट बन जाएंगे. ठीक है, उसके दो कंपोनेंट बन जाएंगे. वन इज, तो दिस स्पीड इज 400 मीटर पर सेकेंड. इसके दो कंपोनेंट बन जाएंगे. एक इस तरफ, दिस इज 400 साइन थीटा, और ये आ जाएगा इस तरफ 400 कॉस थीटा. तो दो कंपोनेंट बन गए. नाउ एट व्हाट मैक्सिमम अल्टीट्यूड शुड द पायलट फ्लाई द प्लेन टू अवॉइड बीइंग हिट. कितने मैक्सिमम अल्टीट्यूड पर उड़ाएगा ताकि वो हिट ना हो. तो पहले इसमें दिया हुआ है, देखो स्पीड ऑफ प्लेन. दिस इज 720 किलोमीटर पर आवर. कन्वर्टेड इनटू मीटर पर सेकेंड, 5/18. तो दिस कम्स आउट 200 मीटर पर सेकेंड. तो जो शेल है, यहां से जो शेल वो फायर करेगा, इट विल मूव अलोंग द पाथ. ये मूव करेगा अलोंग द पाथ OL ऐसे. I found a few of the park locations near you. So shell will move along the path. Shell will move along the path OL. Shell जो है OL path के along मूव करेगा. And plane is moving along the path PL. प्लेन PL पाथ के लॉन्ग मूव कर रहा है. तो लेट देम हिट आफ्टर ए टाइम T. Suppose both hit here after a time T. Now what is the condition for hitting? For hitting, the horizontal distance traveled by the shell must be equal to horizontal distance traveled by the plane. जितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस प्लेन ने कवर किया है और शेल ने कवर किया है, दोनों का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर क्या होना चाहिए, सेम. ओनली देन दे विल रीच द सेम पॉइंट. व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द shell?
शेल की हॉरिजॉन्टल स्पीड जो है दैट इज 400 cos theta into time t, and what is the horizontal distance traveled by the plane? The plane speed is 200 meters per second and it takes time t. तो यहां से t से t कैंसिल हो गया. What is cos theta? Cos theta is 1/2, that is theta is equal to 60 degree. This is the angle with horizontal. In the question angle with vertical is asked. ठीक है, इसका मतलब क्या है? द शेल शुड बी फायर्ड at an angle of 60 degree with horizontal, that is 90 minus 60, 30 degree with 30 degree with 30 degree with vertical. Now what is the maximum height? What is the maximum height of flight of shell? What is the maximum height of flight of shell? H u square sin square theta upon g. So this is u square. So velocity of shell is, I am using here v instead of u because u was the speed of the 400 sin square theta. Sin square theta was 60 degree upon g, 2g, 2 into 10. तो मैक्सिमम हाइट का फार्मूला यूज वी स्क्र साइन स्क्र 2 थीटा साइन स्क्र थीटा अपॉन 2g. तो v was 400 होल स्क्र साइन स्क्र 60 डिग्री अपॉन 2 into 10. दिस इज इक्वल टू